फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइफ विद क्राफ्टिंग। टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। आई एम सो एक्साइटेड और थोड़ी सी नर्वस भी। आज हम बोरियत को दूर भगाएंगे और बनाएंगे जो सुपर क्यूट फूड डूडल्स की दुनिया। तो चलिए साथ में कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं। मैंने शुरुआत की बिल्कुल ज़ीरो से सिर्फ एक पेंसिल और ढेर सारी इमेजिनेशन के साथ कभी सोचा है कि एक स्माइल करता हुआ पिज़्ज़ा या फिर शायद सा बर्गर कितना क्यूट लगता है ना। शुरुआत में तो डर लग रहा था कि पेपर ख़राब ना हो जाए, पर सोचा गलतियों से ही आर्ट निखरता है। और तभी मैंने उठाया पेपर और स्टार्ट कर दी अपनी इमेजिनेशन। तो मैंने सबसे पहले अपनी ड्राइंग का नेम ड्रॉ किया।
फ्रेंड्स, ये क्यूट सा आइसक्रीम और ये क्यूट सा पिज़्ज़ा कितना प्यारा लग रहा है ना। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये अपनी कोई अलग ही कहानी सुना रहे हो, जैसे कह रहे हो, आओ हमारे पास हमारी इस प्यारी सी दुनिया में। सच्ची बताऊं, ड्रॉ करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इनकी मैजिकल सी दुनिया में खो गई। ओ ये देखो इस बर्गर को, क्यूट सी आइज़ और इसका छोटू सा फेस, कितना इनोसेंट लग रहा है ना। आप भी ज़रूर ट्राई करना और देखना ये बनाकर आपको कितना सुकून और कितना अच्छा लगता है। अब टाइम है इन्हें थोड़ी सी डिटेलिंग्स देने का। पेंसिल के बाद हम स्केचेस के साथ आउटलाइन करते हैं तो लगता है कि जैसे कैरेक्टर को उसकी पहचान मिल रही हो। नाउ माई फेवरेट पार्ट, कलर्स। मैंने इनमें ढेर सारे वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए हैं।
जैसे ये एक कोला का गिलास या फिर एक छोटा सा कपकेक, ऐसा लगता है ना मानो ये अपनी ही कहानी बता रही हो। कलर्स फिल करते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कार्टून वर्ड की शेफ बन गई हूँ। अब टाइम है थोड़े से मैजिक का। शेडिंग और कलर्स के बिना कोई भी ड्राइंग अधूरी लगती है ना। तो बस अब थोड़ी सी शैडो और थोड़ी सी हाइलाइट्स और हमारी ड्राइंग रेडी हो जाएगी। और देखिए कैसे ये पेपर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये छोटे छोटे इमोजी और क्यूट फेसेस ही इस ड्राइंग की जान है। तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप है इस जर्नी में। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। मुझे तो ये फूड कोर्ट बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।